Hey, interesting day. Shared all my trades on TradingView chat on this group, and just trying to flex my systems. And mostly all were right. So let's look at what happened. First trade was I was looking for a buy above 876, which and was looking to scalp, and I even mentioned. So this was my message, and I was looking for scalp buys. So I even messaged I'm out of longs. Then was looking for sell after 11 o'clock. When this happens, usually when I'm looking for a sell on an uptrend or kind of a reversal, I look for a reversal trade. I look for a 10 moving average, 20 moving average as a signal, or if I have something on my system, I use that. So here I was looking for a 10 moving average close, and then use stop loss as day high. So which is what happened, but because of this candle, this was almost a 150 200 point candle, which I didn't really want to enter because of higher risk. So I entered around 20 MA, which was 460 levels, 450 460 levels. Exited 50% around this candle low. Why? Because this is where this the up move came. So it's pretty sure the buyers are going to not going to are going to defend this. So I was expecting some kind of a uh, up move here, but wasn't expecting my stop loss to be taken out. So that's fine. I think I made 40 30 40 points on this trade, I'm glad that my stop loss got out, uh, was taken out. Otherwise, if I had kept a stop loss, this was like 700 point move. I'm pretty sure nobody's going to keep Bank Nifty for 600 700 points, especially when it is going against your trade. So yeah, uh, and then so this was my first half move. Nifty, I missed did some scalping. Bank Nifty, I did some scalping, though I was expecting this kind of a move here, but that did not happen. So what did I do next? I around 12:45, I on TradingView idea, I shared, I published an idea which said, let's short Nifty after 1 o'clock. If Nifty is not 1 o'clock is not touching VWAP and is near highs, which is what happened. And I was looking for scalp shots. This is what I mentioned in my videos. My target, I had also given a target which was VWAP break. So basically, I was looking for something like this. This was my reference, and I had one more reference which was this. This is what happened, but I didn't really want to take a risk, so I just wanted this. This also was almost 1:2. So the web break was also 1:2. So if you entered after 1 o'clock, say around 1820 level, this is 1826 is the high. Web break almost gives you 894, right? Which is almost 100, more than 100 points, so more than 1:2. And my reference shows that I can keep this till 130. That is what I did. So I wanted uh, more. So I trailed. I booked few, but I trailed and I exited my trade around 8:30. Did not capture all this. Uh, so I messaged, and I even messaged that you have probably you should be careful with shorts, but I was not interested in going longs. Why I messaged you should be careful with short, because I was hoping that it comes back and then do some scalping here in terms of short. Why I did not go long because of this. So I didn't really want to go long because of this, but there was a possibility of this happening. So I mentioned that be careful with the shots. So basically, a good day for me. I think whoever was following me on chat, or whoever was using this as some kind of a reference with their own system, would have probably be very very happy today, considering the shots were given around 12:45 and market fell crazily. Somebody could have just used a stop loss if they were long, say 1 o'clock low or something similar. And yeah, in terms of positional, I am not bearish. This kind of candle usually leads to a bull move. Let's see if I'm not trading positionally though till Monday, but if till Monday, if this candle low is not taken out, I'm not bearish. I will look for longs, scalp longs, not long longs, but not looking for shorts until this. If that move, this can go wrong if my prediction or my trade here would not make sense. If next 2 days this low is taken out, if it is not taken out in next 2 days, I'll look for scalp longs. निफ्टी से शुरू करते हैं। बहुत ही सही दिन था आज। मैंने पूरा आप सारे अपने जितने भी ट्रेड थे सब ट्रेडिंग व्यू चैट में डाले थे इस ग्रुप में।
और ये यूजुअली मैं करता नहीं हूँ, पर मेरे को देखना था कि कैसे लग चलता है बैंक सिस्टम्स बजट डे पे, जब जिस दिन सबसे ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है। तो अगर आप देखेंगे तो सुबह-सुबह मैंने लिख के भेजा था कि 876 के ऊपर ही मैं बाय करूँगा निफ्टी को। 3 मिनट्स का चार्ट भी भेजा था साथ में। तो 876 के ऊपर जैसे ही आया मैंने बाय किया, और मैंने एग्ज़िट भी लिखा है कहाँ पे किया मैंने। उसके बाद मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी सेल कर रहा हूँ मैं 11 ओ क्लॉक तक, अगर हाई बनाया बैंक निफ्टी ने 11 ओ क्लॉक के बाद सेल करूँगा। यूजुअली मैं, सबका अपना सिस्टम होता है या ट्रेडिंग स्टाइल होता है। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल यूजुअली ये होता है, जब मैं रिवर्सल ढूंढ रहा होता हूँ तो या फिर अगर मेरे पास कोई सिस्टम में रेफरेंस है तो मैं वो यूज़ करता हूँ, या फिर मैं कोई मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। 10 MA या 20 MA स्टॉप लॉस रहता है, और छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री करता हूँ, और स्टॉप लॉस रहता है डे हाई। तो इस केस में भी वही था, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस कैंडल ने जब ये क्लोज किया 10 MA के नीचे, तो ये बहुत ज़्यादा आरआर हो जाता है यहाँ पर। इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री करी नहीं, मैंने 20 MM पे की, 10 MA पे नहीं करी, 20 MA पे की। था 450 460 के बीच में। और मेरा एग्जिट था, मेरे को एक्चुअली ये मूव चाहिए था सुबह, पर ये मूव नहीं मिला। इसलिए मैंने क्या किया, 50% बुक कर लिया, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बाइंग आई थी पहले, जहाँ से आप मूव आया था। तो मुझे पता था यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट तो उसको मिलेगा, इसलिए मैंने इस कैंडल का भी वेट नहीं किया। मैंने इस कैंडल के लो के आसपास, जो 270 था शायद, वहाँ पर मैंने बाय 50% बुक कर दिया। बाकी 50% मैंने डे हाई के लिए रखा, जो कि उड़ गया था एस एल स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मैंने शायद 30-40 पॉइंट्स कमाए बैंक निफ्टी में। और अच्छा ही हुआ मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि यहाँ से 600-700 पॉइंट का मूव आया, जो कि मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। और अगर मैंने रखा होता तो मैं, जो भी मैंने प्रॉफिट कमाए होते, और सब पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता मेरा। तो दैट इज़, उस वजह से स्टॉप लॉस रखना सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप, मैं यहाँ पे ट्रेल कर देता, यूजुअली मैं ट्रेल कर देता हूँ कॉस्ट पे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंज हो रहा था, इसलिए मैंने ट्रेल नहीं किया। मुझे लगा मेरा ट्रेल उड़ जाएगा, पर चलेगा। अब आते हैं हुआ क्या, सेकंड हाफ में क्या हुआ, जो कि मेन ट्रेड था, जो मैंने ट्रेडिंग व्यू आइडिया में पब्लिश किया था 12:45 पे। मैंने बोला था कि 1 o'clock को, अगर 1 o'clock का जो कैंडल अगर हाइस के आसपास है और वीवैप के आसपास नहीं है, ये वीवैप टच नहीं कर रहा, तो मैं सेल करूँगा 1 o'clock के बाद। स्टॉप लॉस रहेगा डे हाई। अगर आप इस कैंडल को देखें, इस कैंडल का हाई था 1826, जो कि 1 o'clock के बाद है। और अगर आप 1820 भी एंटर करते हैं कहीं पर, तो हाई है 40 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस है 40 पॉइंट्स का, सॉरी। और ये इसका लो था 17894, जो कि ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स कुछ है। तो ऑलमोस्ट 1:3, 1:2, 1:3 देता है ये, अगर आप हाई लो नहीं पकड़ते। अब मेरा इंटेंट ये था कि वीवैप, मैंने टारगेट भी दिया था, और मैंने ये भी बोला था स्कैल्प शॉर्ट्स है। क्यों? क्योंकि जो मेरा रेफरेंस था ये था, मेरे पास दो रेफरेंस थे। एक रेफरेंस ये था जहाँ पे ये बोल रहा था 130 के बाद ये रिवर्सल हो सकता है, और दूसरा रेफरेंस ये बोल रहा था कि ये बहुत बुरी तरह गिर जाएगा। क्योंकि मार्केट सुबह से बहुत बुलिश था, इसलिए मुझे इस रेफरेंस पे नहीं ध्यान देना था, इस पे देना था। और मेरे लिए ये स्कैल्प शॉट्स भी 130 तक भी ऑलमोस्ट मुझे 200-200 पॉइंट्स देते हैं। तो वो ही मैंने किया, 130 को मैंने बुक कर दिया। और मैंने इतना तो नहीं, 810 तो नहीं गया मैं, 830 तक मैंने बुक कर दिया। और मैंने यहाँ पर मैसेज में लिखा भी कि मैं कहाँ बाहर निकल रहा हूँ। और फिर मैंने इसलिए लिखा था कि विल बी केयरफुल विद शॉर्ट्स नाउ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से रिवर्स करके फिर स्कैल्प करेगा। पर ऐसा नहीं किया उसने ये वाला फॉलो किया, इसलिए इसलिए मैं लॉन्ग भी नहीं गया यहाँ पर। और मैं बस एज अ स्पेक्टेटर देख रहा था क्या हो रहा है, जो कि बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। पर मैंने काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया था आज, तो मेरे को कुछ देने के मूड में था नहीं मैं। अब पोजिशनली क्या कर रहा हूँ मैं, पोजिशनली मैं वेट करूँगा। मैंने जैसे लास्ट वीडियोज़ में बोला था, आज काफ़ी वॉल्यूम्स आई है, और इंटरेस्टिंग वॉल्यूम्स आई है। लेकिन आज का वॉल्यूम इतना मायने रखता नहीं, क्योंकि बजट डे था। पर अगर नेक्स्ट 2 दिन में अगर ये लो नहीं टूटा, तो मैं लॉन्ग देखूँगा, स्कैल्प लॉन्ग देखूँगा। और इस प्राइस के आसपास ही कहीं देखूँगा, अगर रहता है इस प्राइस के आसपास 2 दिन के बाद। जल्दबाजी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो अभी जो लॉन्ग आएगा वो भी मोस्टली साइडवेज लॉन्ग होगा, लॉन्ग लॉन्ग नहीं होगा। तो इसलिए अच्छे एंट्री के लिए मैं देखूँगा, और अपडेटेड तो मैं वैसे भी करता रहता हूँ यहाँ पर। थैंक यू।